Mentor is the person who helps you define your professional career. Precise रखो, to the point पूछो, specific रहो, और उसमें से जितने pointers मिल रहे हैं, make sure you reflect back. Surrender yourself in the right hands and trust the process. Welcome, everyone, to another insightful episode of our series, Unlocking Corporate Success with Ms. Davinder Kaur. In this series, we discuss common challenges of fresh graduates seeking support to help ease their transition into the corporate world. I am Hanisha, your host for today's discussion on a topic that's near and dear to our hearts: the importance of mentorship in the corporate world. As we navigate the ever evolving landscape of professional life, it's crucial to recognize the invaluable role that mentors play in guiding our journey, shaping our perspectives, and unlocking our full potential. Today, we are privileged to have a seasoned professional and a mentor, Ms. Davinder Kaur, who will share her wisdom and insights on this critical aspect of career development. Devinta ma'am has an academic background in engineering and an MBA from reputed universities in India. She has been a sales professional and a passionate writer with an attitude towards self development and helping others to bring out the best in them. Her book, Filling the Unspoken Gaps: Chaos to Clarity, is launching in coming September, and I personally am super excited for it. She has been a podcaster with podcast Rapri, energy healer, coach, and hypnotherapist, and is on the verge of opening a training institute, Golden Arc. So, before we start, I want to address a beautiful quote. A mentor is someone who allows you to see the hope in yourself. So, without further ado, let's dive into today's discussion. Ma'am, welcome to Anon Streams. How are you doing today? Thank you so much. And thank you, Hanisha. You've been a beautiful introductions around, and I'm perfectly good. The other best thing, what other could be the best thing here, next to helping the next generation here through Anon again, the very basic need of alignment which Anon gives to the next generation. And you guys now planning to get into the big corporate world. Uh, that's the purpose I'm here with. And I'm really happy and looking forward to deep dive. Let's go. Amazing, ma'am. It is actually very important for our generation to learn and get to know that one person who can help and support us in our upcoming future, because we all know life is a race Yeah, and we need that one person to push us in doing things. yeah. So, to let kick things off, let's delve into the concept of mentorship. And ma'am, I would like you to share with our listeners what mentorship actually means in the context of corporate world. Absolutely. So when we say right mentor, uh, so you guys in colleges usually relevant create a relevance with teachers or professors in colleges and schools. We call it teachers. When we get into the corporate world, we usually call them mentor. And believe you me, from after the college, when you get into corporate, mentorship still requires at every step in life. So being a having a right mentor in your vicinity for yourself is a blessing, as I feel. After your parents who taught you the basics of living, mentor is the person who helps you define your professional career. In fact, to some extent, their guidance helps in a big way in defining your personal life too. It's not only professional, they'll actually define you. It automatically starts working on your personal life as well. You would notice it over a period. When you learn to start walking the professional path with them, you definitely actually need a hand to hold on to, right? When your parents actually made you walk for the first time, you were not on your own totally. They gave you their hand to start walking. Once you became confident, automatically you start walking. But time to time, you need their guidance, support. So this is where mentor also helps you with. They guide you, who gives you the tools, the pieces of advice, the guidance, the support from time to time. Very important aspect in your life. Everyone should have a mentor.
So, can we say that a mentor is like a friend, but not in like who does not know about us too personally? That is up to you how much you want to open up to that mentor when you actually having an honest relationship with that person. However, mentor not only a friend, he's a guide. He's a second person after your parent. In schools and colleges, you used to carry your I cards, and Mhm. you carry a father name, mother name, and what is the third person's name you usually put in your I cards below? Guardian. Exactly. So you Okay, have the amazing. place of a guardian for your mentor. That's a great thing. That's a great thing. Yeah, That's a great perspective. absolutely. So, uh, I wanna know about the what are the benefits of mentorship and how does a mentor help us in contributing to our professional development and growth? Absolutely. But what happens when a college student gets into a professional life in a corporate world? What is the first thing would happen to you? First fear of yours. You would feel a lack of confidence, right? You would say, okay, I am joining this new firm for the first time. God knows what would happen. How will I be able to perform? How will my boss and other colleagues be? I don't know the world. Will I be able to adjust easily or not? And so many of such kind of questions keep cropping up for a new kid or any person who's joining for the first time in the corporate world. What if you have someone guiding you through the process, building your confidence to take the steps forward? How would you feel? It would be a great feeling. Yes, somebody is telling me that when you get into the office, how you're supposed to be, what would your impacts be, how would you really go ahead and do it. So, those things, if somebody is telling you, and instead they help you in shaping your outlook or your mindset, they help you to carry particular skill set. So everything needs to be sharpened when you get into corporate world. Not only your skills, your mindset, how do you behave, how do you talk, how do you stay ahead in the game? Because there are so many people trying to prove themselves in corporate world. How do you stay ahead? Just think about how beneficial it can be and how rewarding, because you can make the right decision at the right time with the right guidance you have in your hand now, right? That is how beneficial this mentorship is. So, ma'am, I studied HR in my semester, and when I was in my class, I got to learn about this term buddy. Like when Uh, you, yeah, yeah. So you get this one person who we can call a buddy who helps us in guiding, like who tells us what actually happens in this office and what are the rules, the regulations, the policies, and everything. And wherever you feel underconfident or you don't know what to do, you can go to that person. So I feel like we all need that buddy in our life also, in our personal life too. Absolutely. In fact, Yeah. in one of the last podcasts, in the similar series, in an earlier podcast, I had communicated this aspect that every corporate should have this buddy system Mm-hmm. into their HR. Any new person who comes in for 3 months, they should be handed over to a buddy. Now, that buddy should be able to help the person to sail through within the organization. He doesn't know about the organization, but he is an older, experienced person there. He can guide that new chap. Okay, you're here, come here. Here is the whole office scenario is all about. People usually focus here, and these are the aspects you should take care of. Or the organization thought process is this, or the aim is this, or strategy is this. Some of the basic components should be clarified so that person easily can tuned in. You know and makes it very, very convenient for him by fourth month when he is on his own and trying to really build his own place. He's already got a helping hand before. So very important and very, very useful piece. So, ma'am, I had this one question like in today's time, जैसे AI बढ़ता जा रहा है and people don't talk much, people don't interact much. There's this gap in conversation and communicating things. And so, like, how can we overcome that thing? कि लोग ज्यादातर फोन्स में लगे रहते हैं एंड उनको कुछ अगर समझना होता है वो सीधा जाके एआई पे डाल देंगे कि कैसे करना है हाउ टू हैंडल दिस हाउ टू टॉक टू योर बॉस और एनीथिंग
सो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? एआई आपको ये तो बता देगा कि द डेटाबेस जो मेरे पास पड़ा है फॉर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, हाउ टू हैंडल और हम्म। टॉक टू योर हम्म। बॉस. But how would AI know that how your boss is, what category your boss belongs to? So to just हम्म। go deep dive to find out the characteristic or the behavior pattern of your boss, you need to go a little हम्म। closer to understand him emotionally, right? या। You can't just have the IQ databases or patterns to let you know how to handle few things. You never know how, at particular statement of yours how would he behave. So should I really put that statement across or no? Or if I put it across, how should I put it across? He would like it, or he may not say, "Ye kya hai? What kind of a person are you?" So behavior pattern को उतना judgment AI अभी भी नहीं दे सकता. Though AI has given all and everything possible. So you need the whole, to understand a lot of integrities, nitty-gritties, detailing of how a behavior pattern of a particular person, especially your boss in corporate. अमेजिंग मैम, अमेजिंग। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफी देर से था, ये सेशन स्टार्ट होने के पहले से ही, कि मैं ये पूछूंगी, क्योंकि ऐसा हो रहा है। आई एम इन कॉलेज और ये मेरे साथ कॉलेज में भी हो जाता है। तो मेरे को था कि मैं ये आपसे पूछूं आके कि हाउ डज दिस थिंग Definitely. एक्चुअली वर्क। So तो you need to use both your brains. You can't just keep going with your left brain all the time. If you're not balanced and you're not checking on the emotions of other person with your right brain and using those creative behavior patterns of yours or a beautiful way you speak with others or keep your friendships alive, I think that also again needs to be required to be used in corporate world too. Your bosses has to एब्सोल्युटली। feel it from heart you are talking honestly. How will they do it? AI का statement बोलोगे तो नहीं होगा ना. Absolutely true, true. So, so my next question would be like, mentor mentee relationship कैसे effective हो सकता है, and like how can we maximize our mentorship experience? How can we find that right person for ourselves? And if we want to become a mentor, हम वो उस इंसान के लिए कैसे अच्छा एक mentor बन सकते हैं? सो पहले रिलेशनशिप पे बात करते हैं. सो यू सेड मेंटर मेंटी रिलेशनशिप, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट. सो वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, when mentor is helping mentee and mentee is trying to seek help, honesty and truthful bonding is important piece, very very important. If you try to manipulate each other, कोई एक स्मार्टनेस गेम खेल रहा है बीच में, तो आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं आएगा. Anyone who is not sincere in their effort does not bring that what you're looking forward to. बड़ी क्लियर बात है. मेंटोर्स यूजुअली कैसे टाइप के मेंटोर होना चाहिए? अब कॉर्पोरेट में एक दूसरे को बड़ी बना देना, दो एटलीस्ट वो उन्होंने शुरू तो किया कहीं से, बट यू नेवर नो कि आपको जो 3 महीने के लिए वो बड़ी दिया गया है वो जेन्युइनली आपको हेल्प करने आया है या आपको गेज करने आया है कि किस टाइप का नया मुर्गा आया है. यू गेटिंग मी? एब्सोल्युटली। यू इट इज गेटिंग मी? लाइक फर्स्ट फ्रेशर्स आए हैं कॉलेज में और रैगिंग करने लग जाते, फ्रेंड बनते एब्सोल्युटली. तो बनते। वो भी पॉसिबिलिटी है. सो यू नॉट श्योर दैट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफर्ड यू एज अ बडी कुड बी अ राइट मेंटोर फॉर यू. बट यस, ओके, फॉर 3 मंथ्स में आपको कंपनी के बारे में जो भी हेल्प चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वहां से मिलेगी. हाउ डू यू चूज अ राइट मेंटोर फॉर यू? यू हैव टू लुक कहाँ पे मेरी फ्रिक्वेंसी और ट्यूनिंग बैठ रही है. वो मेंटोर कैसा होगा? उसके पास सिंपैथी होगा, उसके पास पेशेंस होगा आपको सुनने के लिए. इनिशियली वो सारी चीजें आपकी सुनेगा, पहले आप किस तरह के हो, क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो, ये बात बोल रहे हो, तो आपका मेंटल थॉट प्रोसेस है क्या. फिर वो आपको गाइड करना शुरू करेगा हाथ पकड़ा के कि मेंटोर, कि उसको एक तो टाइम बहुत निकालना पड़ेगा आपके लिए. तो राइट मेंटोर आपको, अरे अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं. द पर्सन हु फील्स दैट यू रियली नीड हेल्प राइट नाउ सेड ओके, आई एम राइट नाउ ऑक्यूपाइड, बट मे बी मुझे 15 मिनट दे, मैं तेरी बात सुनता हूँ, क्या हुआ. जब आपको ये फीलिंग आने लग जाएगी ना, somebody is there at for my support, maybe not right away, maybe after a day, but that person carries that in his mind कि हाँ मुझे इसकी मदद करनी है, I should really immediately get back. वो जो फ्रीक्वेंसी और जो ट्यूनिंग आनी शुरू होती है, वो होती है राइट मेंटोर की. और फर्दर और क्या होगा, मेंटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है. व्हेन यू सेड रिलेशनशिप, इट हैज टू बी बोथ वेज, कैन नॉट बी वन साइड, राइट. मेंटी क्या करेगा? मेंटी करेगा ओपन माइंड. उसको सब कुछ रिसीव करना है, उसको एक्सेप्ट करनी है चीजें. बीइंग कोचेबल, उसको बनना पड़ेगा कि हाँ आप, मैं हूं, आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ, प्लीज टीच मी. और क्वेश्चंस पूछो, स्पेसिफिक पूछो. ये नहीं कि उसका दिमाग ही चाट लिया और उसके बाद बोले कि नहीं यार, नॉट हैपनिंग. यू गेटिंग मी? सो या। there are so many things which both has to take care of, and
टू मेनी डिफरेंट पाथ पे नहीं जाना, टू मेनी डिस्कशंस नहीं उठानी। मेंटी की कई चीजें हैं जो उन्होंने ध्यान रखनी है। प्रिपेयर बिफोर द मीटिंग व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक टू मेंटर। बस ये नहीं कि बस उनका टाइम लिया और देन यू स्टार्ट। तो प्रिसाइज रखो, टू द पॉइंट पूछो, स्पेसिफिक रहो, और उसमें से जितने पॉइंटर्स मिल रहे हैं मेक श्योर यू रिफ्लेक्ट बैक, उसको लिखो, कहीं पर पॉइंटर्स क्रिएट करो अपने पास, उसको एज अ, उसको जस्ट टेक इट, दैट इज योर ग्रोथ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन ग्रोथ, एंड ही इज जस्ट अ हेल्पर। अगर उसी पे डिपेंड कर जाओगे आप पूरी तरह से कि वही है मेरी जिंदगी बनाने वाला, अब मैंने तो छोड़ दिया अपने आप को, सरेंडर डजंट मीन दैट। Yeah, सरेंडर मीन्स एन एक्सेप्टेंस absolutely. फ्रॉम हिम। दैट इज रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को क्रिएट करने के मेजर पॉइंटर्स हैं। Okay. और आप अगर मेंटोर बनते हो, जैसे कि आपने क्लास में एक एडिशनली पॉइंट डाला, हम्म हम्म तो मेंटोर अगर आप बन रहे हो, तो वो जो मैंने बेनिफिट्स के पॉइंट पे जब मैंने रिलेशनशिप में कहा ना, मेंटोर बनने के लिए आपको एम्पैथी रखनी है, आपको अपना टाइम देने का प्लान आउट करना है। अगर आपने डिसाइड किया कि इसको किसी बच्चे को मेंटोर करो, मेंटोरशिप दे रहे हो, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा उस बच्चे को खुद ही। आपको हो सकता है वो बच्चा प्लान्ड ना हो, आपको प्लान करके देना पड़ेगा कि आप इस वीक के इस टाइम स्लॉट को मेरे साथ बांध लो, और उस वीक में जितने आपके साथ जितने भी पॉइंटर्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, क्वेरीज हैं, आप कहीं पर पेन डाउन करो, एंड देन वी सिट टुगेदर फॉर 1 hour, यू जस्ट हैव दोस डिस्कस्ड विद मी। फिर आप टाइम टू टाइम यू कैन कीप गाइडिंग दैट पर्सन। ये मेंटोर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन क्रिएट योर शेड्यूल्स। So we can say that effective mentoring is also active listening. You have to be aware, you have to be there, your mind should be there, but you should not take that person for granted. एब्सोल्युटली। Amazing. I would like to shift our focus to basically how mentorship like contributes to corporate success and how can it foster our leadership development, talent retention हो गया, organizational growth हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होगी, तो ये कंपनी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, इफ अ किड who's a very raw person doesn't know about corporate, coming ready for the corporate to operate from day one, कॉर्पोरेट के लिए तो वो बेनिफिट है पहली चीज। सो व्हाट इज हैपनिंग इन मेंटोरशिप, न्यू ज्वाइन नहीं आया, लर्न्स टू अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट ऑलरेडी, बिकॉज मेंटोर जो है हेल्प कर रहा है। टैलेंट जो है इट्स बीइंग कल्टिवेटेड ऑलरेडी, मेंटी इज ट्रेन्ड एंड कोलैबोरेट उसने कर लिया, और राइट वे ऑफ वर्किंग उसको सीख गई। उसने जो कॉर्पोरेट में आने से पहले द फर्स्ट स्टेप पे वो ऑलरेडी सीख गया कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिहेव कैसे करना है। सबसे पहली चीज उसने सीख ली ऑलरेडी बिफोर कमिंग। इट्स, इफ यू सी दिस, इफ अ पॉलिश्ड पर्सन इज कमिंग, रॉ को उसने पॉलिश करके मेंटोर ने ऑलरेडी दिया एट द फर्स्ट स्टेप टू द कंपनीज। ऑर्गेनाइजेशन को क्या ही चाहिए, ये तो विन विन प्रोपोजिशन हो गया सबके लिए। बच्चा तैयार है, कहता हाँ मुझे समझ आ गया, मेंटोर कहता है हाँ मेरा किया हुआ काम सक्सेसफुल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कहती है मुझे रेडीमेड बच्चा मिल गया। परफेक्ट। नाउ यू मेंशन्ड कपल ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप क्वालिटी हो गया या अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट्स हो गए। इफ इम्बाइब्ड एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, अगर उसको रेडी किया जा रहा है और वो मेंटोरशिप के थ्रू उसे लीडरशिप क्वालिटीज भी उसके अंदर डाली जाएगी। अब लीडरशिप क्वालिटीज क्या है? एम्पैथी। जब खुद मेंटोर एम्पैथी दिखा रहा है उसकी तरफ, मेंटी क्या सीख रहा है उससे? दे आर ऑल वाइब्रेशंस वी आर पासिंग थ्रू। मेंटोर खुद दिखा रहा है कि मुझे तेरे को टाइम देना है, मेंटी क्या सीख रहा है? मेंटोर खुद उसको दिखा रहा है कि मैं तुझे पॉलिश कैसे कर सकता हूँ, इन्वायरमेंट क्या चीज है, तुझे कैसे कंफ्लिक्ट मैनेज करने हैं या कैसे तुझे हैंडल करने हैं अगर तेरे को टीम दी जाती है। मेंटोर मेंटोर से वो सीख रहा है, मेंटो इज ऑलरेडी डेवलप्ड। ऑर्गेनाइजेशन लैडर पे जब वो चढ़ना शुरू करता है द वेरी फर्स्ट स्टेप, तो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए उसको, जब मेरे टाइम पे क्या था, मुझे, हम लोगों को 10-10 15-15 साल सोचने में लगते थे कि हाँ यार वो टॉप पोजीशन पे जाने के लिए शायद इतना टाइम लगेगा। आज की डेट में आप देखो क्या हो रहा है, 2 साल में 3 साल में बच्चा ऑलरेडी लीडर बन रहा है। कैसे? क्योंकि दे आर वेल ट्रेन्ड एट द फर्स्ट स्टेप। तो ये लर्निंग है जो मेंटोरशिप लेके चल रहे हैं। आई थिंक इट इज बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट रोल इन एनी वंस लाइफ ग्रोथ पैटर्न में। आजकल मेंटोरशिप इज सो इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है ये और अभी भी उतना रिकॉग्निशन नहीं है। इट हैज टू रियली गो इवन बियॉन्ड व्हाट इट इज टुडे। आजकल के टाइम में जैसा आई एम इन कॉलेज, तो कॉलेजेस अब समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करते हैं, मेरे कॉलेज में भी हुआ था। तो वो बच्चों को कॉरपोरेट में आगे जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आप इंटर्नशिप्स करो, अब चाहे आप 1 महीने की कर लो, आप 1.5 महीने की कर लो। तो जिन बच्चों को कॉरपोरेट में एक्चुअली जाना है,
वो उसके लिए अभी से ही अपनी लैडर पे वो स्टेप ऑन करने लग जाते हैं रादर देन जंपिंग राइट अपॉन इट. सो आई फील एब्सोल्युटली. लाइक धीरे धीरे ये सब चीजें अब डेवलप हो रही हैं. स्कूल्स में भी अब अनॉन है, इंटर्नशिप्स कराते हैं, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है. अब एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे को आप सीधा कॉर्पोरेट में भेज दो, वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, वो वही कोलैप्स एब्सोल्युटली. होके वापस आ जाएगा. So you caught it. वो You वही know, हो you जाएगा. actually got या the rope. कहाँ पे जरूरी हैं चीजें. या और मेंटोरशिप या कहाँ अप्लाई हो रही है आपकी इंटर्नशिप पे. एक्चुअली मेंटोरशिप अप्लाई होती है पूरी तरह. हम्म जब हम्म आप इंटर्न बन के किसी जगह पे जाते हो, इंटर्नशिप क्रिएट कर रहे हो या कर रहे हो, उनकी गाइडेंस के बेस पे जब आप काम करते हो और उनको डेवलप करते हो या चीजों को समझते हो, दे आर द वेरी फर्स्ट मेंटोर्स फॉर यू. दे आर टेलिंग यू ये करो, ये मत करो, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, इस तरीके से चलता है, ये नहीं चलता है. सी द मार्केट. तो आपको एक ग्लिम्स देते हैं मार्केट की. आपको एक आइडिया देते हैं कि बाहर हम्म का दुनिया है कैसी. क्योंकि कॉलेज की दुनिया तो फ्रेंड सर्कल और अपना कैंपस और इन्हीं चीजों में होती है ज्यादातर. या पार्टीज हो गया, एब्सोल्युटली. दोस्तों से मिल लिया, बाइक्स पे लेके निकल लिए, कहीं भी कुछ भी कर लिया. राइट. तो यू हैव योर ओन टाइम स्टाइल एब्सोल्युटली. एंड योर ओन टाइम पैटर्न्स. बट जब आप कॉर्पोरेट में घुसते हो, इट इज मोर फॉर अदर्स देन यू. एंड देन यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ विद दैट अदर एम्स ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन एम के साथ, ताकि वो आपका एम भी बने साथ में. तो बहुत चीजें हैं जो चेंज करनी पड़ती है ओवर अ पीरियड. So ma'am, I have this doubt कि for example a person goes to a firm, वहां पे उसको एक मेंटर असाइन हुआ, बट उसको नहीं समझ आया, वो उसको अपने मेंटर के साथ नहीं कनेक्ट बैठ पाया. Without making that person feel bad, without like not destroying the environment or not making bad environment, आप कैसे कर You are सकते taking हो? out all the secrets from me in this podcast itself. I am Uh, getting very excited. This is very okay. interesting. So there are some typical processes usually happens in different organizations. In my organization, when there was a buddy system and somebody was Mhm. allocated, you being new, you don't want to disrupt anything in your for yourself. You never Yeah. know how it will impact you, right? So usually do not speak much. होता क्या है कि एचआर खुद अपने आप अपनी तरफ से एक सर्वे रन करता है टाइम टू टाइम. 1 महीने बाद करेगा, 15 दिन बाद करेगा, 2 महीने बाद चेक करेगा, आर यू सेटिस्फाइड विद द मेंटोरशिप यू आर गेटिंग. One way of Mhm. doing is there, if he ask you one to one, you can give some feedback. दो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. यहाँ पे स्मार्टनेस गेम खेलनी पड़ती है थोड़ी सी. दिस इज हाउ यू Mhm. लर्न योर कॉर्पोरेट Mhm. वर्किंग. Manipulatively say, though I really respect and everything is going perfectly okay, but I am missing some gaps here. 1, 2, 3, 4, 5. Got it? So constructive feedback can help you through. Uh-huh. And otherwise, आप खूब क्वेश्चंस करो. अगर वो मेंटोर पेशेंस रख रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं आके आपके साथ उसकी ट्यूनिंग बैठ जाएगी. अगर उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है, वो एचआर के पास खुद जाके बोलेगा मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं संभाल रहा इसको. और थर्ड थिंग कुड बी द मेंटोर. आप क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पा रहा है. In some days, you automatically develop a good corporate relationships within the space you're working. You Mhm. seek your helps and guidance and clarity from other people also. Don't only Mhm. depend on that person if he is not a right mentor. My next question would be like, how can you elaborate the role of mentors in promoting diversity and equality? क्योंकि हर टाइप के लोग आते हैं फर्म में. Absolutely. यू कैन नॉट एडजस्ट विद एवरी पर्सन, तो आप अपने आप को कैसे मोल्ड कर सकते हो? एंड कॉम्प्रोमाइज तो हर जगह होता ही है, तो आप उस वे में कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो ताकि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहे? Absolutely. So I'll correlate with what you would be easily, correlate yourself with being a kid and you being a teacher or a parent. Let's say you now a teacher or a parent, and how you would encourage your kid to make sure you have friend circle which is allowing the diverse people also into that group. कि हम पता चले. पता मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्चुअली वी हैड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, आई शुड से अर्लियर, दैट बिहारियों का ही ग्रुप, कश्मीरीज का ओनली ग्रुप, द नॉर्थ इंडियंस ओनली ग्रुप, द हम्म बॉम्बे मुंबईकर्स ओनली ग्रुप. People हम्म easily get entangled in their own, the specific short groups. But over a period of time, when you start to grow, when you start to get mature, people start to mingle around with different groups also. अब मेरा सर्कल बहुत वाइड था, बहुत डाइवर्स था. वी लर्न इट. वो कहीं ना कहीं
पेरेंट्स के साइड से या टीचर के साइड से वी स्टार्ट लर्निंग दैट यू बी इंक्लूसिव। वो भी आपका दोस्त है, ये भी आपकी फ्रेंड है, उसके साथ आपको नहीं रखना है, चलाना है। So when you actually learnings come from your background, it becomes easier, inclusion in your personal life. But it has become now utmost important for everyone to adopt. Not only few of those who learned, but everyone has to learn it. So some people still feel that why should I connect with that person who's not of my category or a gender or status or blah blah. You know, so for those it becomes very difficult to perform in a team, or might as well they don't even grow that much. So mentorship is a relationship which can help guide and teach them how diversity and inclusion can be placed into the behavior patterns over a period of time. As we were talking about emotional intelligence, I usually take workshops on. So ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी एनहांस करता है। तो जब मेंटोर आपके साथ काम कर रहा है, वो ये देख रहा है कि आप क्या चीजों के ऊपर फोकस डाल रहे हो, कितना थॉट प्रोसेस आपका कहाँ जाता है। दिस इन्वॉल्वमेंट मेंटोरशिप हेल्प्स यू दैट मेंटी की एडवाइस दे, उसको एक्सपीरियंस अपना शेयर करे, उसको ऑफन लाइव एग्जांपल्स के साथ समझाए। ये बैरियर्स रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिविटी इज द ओनली वे टू वर्क अहेड। टीम वर्क, कोलैबोरेट, नेटवर्क। हाउ विल यू नेटवर्क एंड कोलैबोरेट विद डिफरेंट पीपल? देयर आर सो मेनी। और सब कुछ आजकल लोकल थोड़ी है, अब तो सब कुछ ग्लोबल हो चुका है। एंड ग्लोबल मीन्स इट्स टोटली आउट Absolutely. ऑफ योर you know the only group kind of a scenario. So might as well, this is utmost portion where mentor should help. Relating to that, I had a Mm. subject in my college, cross culture management. Yeah. And in that, like, I learned that बहुत सारी चीजें होती है। पर्सन गोज टू, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में फर्म है बट आपको और बेटर रिलेशनशिप्स बनाने के लिए आपको यूएस भेज दिया। अब वहां पे आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, पीपल इंटरैक्टिव नहीं है, वार्मथनेस नहीं है, तो उस चीज में बहुत हेल्प करता है। एंड कॉन्वर्सेशन इज द की। So एट you द have एंड to step out कॉन्वर्सेशन of इज द की। your comfort zone या। to understand somebody else's thought process, culture, society, and then adjust where you can. It's not needed to be like them totally, but somewhere some connect has to be established, which can let you be comfortable with them to grow together. So end of the day, it's your purpose या। to या। grow, या। but taking people with you to grow so that they also grow. Everyone is connected. So that's how it is. सो इन सब बेनिफिट्स के बाद भी मेंटर्स को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं मेंटर मेंटी रिलेशनशिप में, तो उसको कैसे ओवरकम कर सके? हाँ. So there are definitely good amount of obstacles. जो आपने एग्जाम्पल लिया था ना पहले, वेरी क्लियरली दैट अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटोर दिया और मुझे वो पसंद ही नहीं है, तो मैं काम कैसे करूं? दिस इज वन ऑफ द ऑब्स्टिकल यू ऑलरेडी पिक्ड इट, या। right? या। So how, what is the problem? You're not being honest that I don't like you. So you're being manipulative now, and lot of unrealistic expectations हम रख लेते हैं कई बार. That is another way of obstacle which comes up कि मेरे को तो अब मेंटोर मिल गया है, यही मुझे सब कुछ बता देगा, और हम कोशिश भी नहीं करते। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं, वी नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है वो मेंटोर आपके डिपार्टमेंट का है ही नहीं, वो फाइनेंस का या कोई और जने का बता दिया गया, क्योंकि आपको सिर्फ एडजस्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके प्रोफाइल को डिटेलिंग नहीं कर रहा है। सो इफ यू नीड टू लर्न योर ओन एस्पेक्ट्स, तो उससे उतनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है जितनी आपको पता है कि वहां से मिल जाएंगी। इसके बियॉन्ड इट इज यू हु हैज टू वर्क, राइट? So you need that kind of a clarity, you know जैसे कि एक शिष्य गुरु का रिश्ता माना जाता है ना, जो कि आजकल देखा जाए तो बड़ा ही फीका सा हो गया है बेचारा। बहुत बट ज्यादा। यू नीड दैट प्योरिटी विद योर मेंटोर, और वो अगर नहीं है तो वो इट बिहेव्स लाइक अ वेरी ऑब्स्टिकल थिंग फॉर यू, एंड वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो आप उसको ओवरकम कैसे करोगे? किसी भी रिलेशनशिप को जब आप शुरू करते हो तो आप क्या करते हो? आप उसके साथ रेपो बनाते हो। कुछ भी आप ले लो, पर्सनल रिलेशनशिप्स ले लो, प्रोफेशनल, स्कूल, टीचर, सबके साथ आपको एक रेपो क्रिएट करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज है ये रेपो बिल्डिंग। देन यू नीड टू ट्यून योरसेल्फ विद दैट पर्सन कि इफ दिस पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर मी,
मेंटोर क्या कहेगा, ओके आई नीड टू हेल्प, एंड मेंटी क्या कहेगा, ओके आई नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन। तो वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, फीडबैक दोनों तरफ से बड़े क्लियर होने चाहिए और बड़े ही प्यार से दिए जाने चाहिए कि आप हम्म मुझे ये चीज ठीक नहीं लगी है, ये चीज ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लाइफ साइनोसाइटल है, तो आपके रिलेशंस, आपके सिचुएशन, सब कुछ साइनोसाइटल मोड में ही चलता है, कभी बहुत बढ़िया कभी बहुत खराब। उसको कैसे आपने बैलेंस आउट करके चलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। और उसके बाद आपके चांसेस ऑफ जो कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, दे इफ दे कमिंग अप, तो उसको कैसे आपने ओवरकम करना है, बाय सॉर्टिंग इट आउट टुगेदर, हम्म कम्युनिकेशन गैप को दूर करते हुए अवॉइड करना है, और एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, और सॉर्ट करके रखना है चीजों को। देखो, पेन और प्लेजर ये दोनों ही डायरेक्ट रिलेशनशिप कैरी करते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस और ईगो से। जहां आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई है, ईगो हाई है, पेन विल कम। आपकी एक्सपेक्टेशंस लो है, डिलीवरेबल्स हाई आ रहे हैं, ईगो लो है, सरेंडर है, एक्सेप्टेंस है, आपका प्लेजर पॉइंट चलना शुरू हो जाएगा। जहां आपको ये रिलेशनशिप क्लियर हो गया, वहां हम्म आपका मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप वर्क कर जाएगा, और जब वो वर्क कर गया तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। So you basically mean that expectations, over expectations leads to failure, and we should Yeah. never expect anything from anyone because जिससे सबसे ज्यादा करते हैं वही सबसे ज्यादा गिराता है. क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा उम्मीद रखने लगते हो, तो वो अगर नहीं मिला तो हर्ट करेगा ना। तो आप हम्म उतनी उम्मीद रखो कि हाँ ठीक है, ये तो मुझे मिल ही ये तो पता है, मैं बता देंगे, हेल्प आ जाएगी। हम्म और अगर उससे ज्यादा डिलीवरी आ रही है तो आप हैप्पी फील करते हो, एंड यू आर ग्रेटिट्यूड ना, कि हाँ इस बंदे ने मेरा, फील ग्रेटफुल, इसने मेरे को, देखो मैंने इतना हम्म सा पूछा, इसने मुझे और बातें बता दी, विच इज हम्म. हेल्पफुल टू मी। बट समवेयर आई फील लाइक कि कभी कभी ना माइंड में इंसान अलग एक्सपेक्टेशन दूसरे वे में बना लेता है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बैठी हूँ मेरा मेंटर के साथ, मैं उसके लिए लंच लेके गई या वो मेरे लिए लंच लेके आ गया, तो मैं यही सोचूंगी कि वो वाओ दैट पर्सन इज सो केयरिंग, वो मेरे लिए लंच लेके आ रहा है, तो अब मैं इसके ऊपर सब छोड़ देती हूँ. बट एंड में जाके वो, जब प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है दोबारा, तो वो सब गिर जाता है. तो ये एक टैक्ट है जो एक ही दिन में नहीं सीखा जा सकता। दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू बिकम ट्यून्ड टू डिफरेंट पीपल इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। अब मेरे सामने हर तरीके के लोग आएंगे, बहुत पॉलिश्ड भी आते हैं, बहुत दोस्त वाले भी होते हैं, तो उनके साथ बात करने का तरीका बदल जाता है, उनके साथ हम्म बॉन्डिंग चेंज हो जाती है। आई प्रोफेशनली अगर मैं किसी की मीटिंग में गई हूँ, तो आई वुड ऑलवेज से सॉरी सर, नहीं आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग, थैंक यू सो मच। बट इफ आई एम गोइंग अहेड एंड मीटिंग अ फ्रेंड, दो इट्स अ बिजनेस मीटिंग, I said, what the hell are you doing? Let's go for a lunch, yaar. चल. So the whole statement, whole perspective changes. तो वो धीरे धीरे यू डेवलप ना, किसके साथ कितनी बात कर रही है। हम्म. बट एट द एंड पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ Yeah, अलग ही has to, रखनी चाहिए. mentor is, mentor आपका प्रोफेशनल mentor should be a professional support. So, ma'am, I want to know about the impact of mentorship on grooming the next generational leaders. मेरी generation के बच्चों को कैसे उस वे में groom कर सकते हैं, and how to promote diversity among them, and basically workplace में कैसे include हो सकते हैं, कैसे inclusion अपना कर सकते हैं, and so basically how can mentors support the mentees in overcoming that barrier. Yeah, so there are a lot of ways. In fact, you touched base this. When you were introducing me, I was telling that, I'm coming up with an institute. Actually, it's been my dream to help next generation to remove this gap as much as possible. So, in fact, I'm coming up with a beautiful program called Skilling, College to Corporate. So, how we are doing? Next generation, they need to mend their ways to become better you. Or mentorship helps in various aspects of human behavior. So working on this skill set, अब हमने तीन तरह के एस्पेक्ट देखे हैं बच्चों को चाहिए। एक तो हार्ड स्किल, आजकल एआई एमएल दुनिया भर की चीजें, क्लाउड टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। आप जब कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, आप बिल्कुल थ्योरेटिकल होते हो। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे उतरते हो, आपको सामने राउटर रख देंगे, जी इसको प्रोग्राम करो, आपको पता ही नहीं क्या कह रहे हैं, you don't even understand. So hard skills, certification skills, these are very important. तो एक तो वो एस्पेक्ट पे बच्चे थोड़े तैयार हो जाएं बिफोर दे रियली लीव कॉलेज एंड देन गेटिंग इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सेकंड, उनको चाहिए सॉफ्ट स्किलिंग, जैसे कि हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, लीडरशिप पे क्या है, हाउ डू यू रियली बिहेव, हाउ डू यू, ऑल दोज सॉफ्ट स्किलिंग पीसेस।
और तीसरा एस्पेक्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कैसे बैठे हो, एटिकेट्स क्या है आपके, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर क्या करना है आपने, तो Mhm. स्ट्रैटेजी क्या लेके चलनी है, ये चीजें एक, ये तीनों एस्पेक्ट जो है वो ध्यान रखते हुए आपको बच्चा को तैयार होना बहुत जरूरी है। एक तो ये हम लोग ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, बच्चे बर्नआउट बहुत हो रहे हैं, वो किस तरीके से एंग्जाइटी और स्ट्रेस के साथ मूव आउट कर रहे हैं। तो बीइंग अ मेंटोर, या व्हाट आई एम रियली वी आर गेटिंग इनटू इज समथिंग कॉल्ड एज अ बीइंग रेजिलिएंट। उनको बच्चों को रेजिलियंसी सिखाना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और बुरा हाल है। कॉलेज में आप पढ़ाई से बर्नआउट हो रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चार आदमी कुछ आपको बोल के चले गए, आप पब्लिकली कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, वो चीजें ठीक नहीं फॉल की, अब बिजनेस कुछ लाना चाह रहे थे, नुकसान हो गया, वो नहीं वर्क आउट हुआ, तो आपकी क्या इमेज क्रिएट हो रही है। सो सो मेनी थिंग्स यू कैरी ऑन इन योर माइंड थ्रू आउट द डे। बर्नआउट्स ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, उस पे एस्पेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंड देयर इज अ another thing which is coming up very very well is on the happiness side of it. So we are working on Mhm. all these happiness index की लोग खुश, EQ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, या सिर्फ rat race चल रही है. So keeping all that mind, next generation has to be groomed, and this has to be worked out. ये सब inclusive हो, आगे लर्निंग्स में धीरे धीरे ये चीजें कॉलेजेस में इंक्लूड हो जाएं। और इन एस्पेक्ट्स के साथ एक मेंटोरशिप अगर आपके पास है और आप वन टू वन किसी से गाइडेंस ले रहे हो, और ये एस्पेक्ट्स वो अगर आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, so having a beautiful corporate world which is inclusive with the kids like you who are vibrant, then you turn out to be a good composed, balanced leaders for tomorrow. Definitely, there's a lot of Mhm. work which has to go in. But ma'am, this has been a very enriching and interactive conversation with you, and I personally have a lot of takeaways that I plan to implement in my everyday life and whenever in future I'll start my corporate journey. Yes, And I know that this conversation will definitely help me in transitioning from college to work life. So before we close today's conversation, ma'am, do you have any other words of wisdom जो आप share करना चाहेंगे हमारे listeners के साथ? absolutely. Listeners, आपके mentees होने वाले हैं ज्यादातर. So I want to say one thing here. Life was very simple and enriching before, right? And we have complicated it. So while Absolutely. learning every aspect of life, it's important कि आप surrender करो. Surrender yourself in the right hands. You know, it's a full statement to be used. Surrender yourself in the right hands and trust the process. जब आप develop हो रहे होते हो, transform हो रहे होते हो, बहुत कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं लगेंगी. But trust the process if you are into right hands. You are listening to this podcast, that means you're being aware today, which itself is a proof of you being part of the transformation. आपकी शुरू हो गई है already यहाँ से. And other process steps जो भी आएंगे will automatically आपको जो है वो flow पे डाल देंगे, and it will keep falling in place with your acceptance. Go for it and enjoy this beautiful ride called life. Amazing. Life is complicated, but we can make it beautiful. Yes, Absolutely. Absolutely. So thank you, ma'am, for sharing your invaluable insights on this dynamic relationship between mentor and a mentee and how mentorship can empower future leaders and foster diversity and inclusion in the workspace. We look forward to our next conversation with you where we will discuss on more intriguing topics. And thank you, listeners, for tuning into an on streams. Join us next time as we continue our journey of unlocking corporate success with more thought provoking discussions and expert perspectives. Tune in to listen to our enriching conversations with experts and leading psychologists streaming on our channel on Spotify. Until then, stay inspired and keep striving for greatness. Thank you.